Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Aadi. As usual, we are here with Marshal Bedi सर के साथ हैं जो हमको बताएंगे यार ड्रोन्स भारत में पिछले सम टाइम वीव सीन घातक फ्लाइंग, वीव सीन आर्चर का एक लॉन्च हो गया जी। अडानी साहब बोल रहे हैं हमने तो ड्रोन्स एक्सपोर्ट भी करने शुरू कर दिए, हम आर्म फोर्सेस को देंगे देंगे हम बाहर भी भेजेंगे। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन दिस सेगमेंट। एंड दूसरा जो मेन इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे को सर से बात करनी है इज काफी सवाल हमेशा आते हैं व्हेन द इंडियन आर्मी हैज टू कंडक्ट ऑपरेशंस इन द माउंटेन्स। आज जैसे आपको पता है ऑपरेशन सर्वशक्ति चल रहा है एंड उसके अंदर इट्स बीइंग डन इन द पीर पंजाल। पीर पंजाल इज अ वेरी थिक फॉरेस्ट एंड वेरी हाई अप माउंटेन्स, 12-13 हजार फुट तक जाते हैं। तो हाउ इफेक्टिव आर ड्रोन्स इन दैट एरिया? एंड दूसरा सेगमेंट ऑफ कोर्स इज चाइना, जिसका तो पूरा बॉर्डर ही माउंटेन्स है। हाउ इफेक्टिव आर दीज ड्रोन्स इन दैट एरिया? क्या हमको इसके बारे में कुछ ज्यादा समझना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स whatever else details that sir can actually share with us. Namaskar sir, welcome to the show. Namaskar Aadi, always a pleasure to be here and talking serious stuff with you, and your audience is absolutely fantastic. Always enjoy. Thank you. Thank you sir, thank you so much. It's an honor, trust me. क्योंकि आपके shows जो होते हैं ना सर, we are hinting into technicalities, थोड़ी साइंस की क्लासेस भी याद आ जाती हैं एंड वो सब भी हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दैट वी ट्राई एंड गेट टू नो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, जिसको मिलटेक बोल सकते हैं, उसमें हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, थोड़ा बहुत हमको आइडिया मिलता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा एंड देयर इज वेरी लिटिल रियलिटी इफ आई मे। तो सर सबसे पहले नहीं सॉरी, मैंने कहा कोशिश रहती है मेरी टेक्नोलॉजी व्हेन यू से कि बिल्कुल बेसिकली टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी और बेसिक्स व्हाट यू सेड एजुकेशन इन ए नॉस्टैल्जिक वे। लॉट ऑफ अस रेड अबाउट दोस थिंग्स, हर्ड अबाउट दोस थिंग्स। नाउ आई नो कि लोगों को पता है, पीपल आर नॉलेजेबल, बट इट इज जस्ट काइंड ऑफ ब्रशिंग अप। सो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू, कि भाई उसको रिलेट करके थोड़ा डे टू डे लाइफ से थोड़ा कि कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करती है, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हो। एंड फिर आजकल तो सोशल मीडिया इज पार एक्सेलेंस। आई मीन पीपल वंस दैट इग्निशन इज सेट इन, then of course people can light their fire themselves, I suppose. So that is the aim, that is what I try to do when I touch upon technology thoda basically. Yeah, thank you sir, sorry for so interruption. नहीं सर, लेट्स बिगिन विथ मेन क्वेश्चन। सर मेरे को जो पूछना है पहले तो, सी वी आर वेंचरिंग इनटू ड्रोन्स इन भारत। अभी तो काफी चीजें हमको पता भी नहीं है ऑब्वियसली, एंड दे लाइकली वेल सो, क्योंकि ये चीजें हमको हमको पता चलेंगी तो एनिमी को भी पता चलेंगी, तो वी डोंट वांट टू ओवर दिस थिंग। देयर इज अ लॉट, बट जो जो हिंट्स पब्लिक डोमेन में दिखते हैं सर, एक आर्मी एक्सरसाइज हुई थी अभी पीछे, उसके अंदर ऑफिशियली नोट में आया था कि वी हैव यूज्ड स्वॉर्म ड्रोन्स इन द एक्सरसाइज। उसके बाद we've seen this आर्चर का थिंग हैपनिंग, we've seen the so called alleged failure of the tapas कि भाई ये तो गया ये वो and all that stuff, but there's a lot happening in that domain also. That was a big learning platform मेरे हिसाब से तो। Plus small medium sized drones, big sized drones, all sorts of stuff is happening in India। और आपने इसके बारे में हमको एक बार ही समझाया है ड्यूरिंग द आत्मनिर्भरता एपिसोड। आपने you've taken it up very in detail। तो सर फर्स्टली ओपन में हाउ डू यू सी द ड्रोन प्रोग्राम इन भारत? लेट्स एंटर इनटू दैट एंड देन वी विल टेक द स्टोरी इनटू द माउंटेन्स एंड एवरीथिंग सर। Yeah, see what happens is program drones का, जैसे पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि we started seriously looking into it post Kargil, और उसमें अब जब माउंटेन्स की बात करेंगे तो उसका जिक्र आएगा। तो तब से हमने शुरू किया सीरियसली, जब हमने हेरॉन्स और सर्चर्स इंडक्ट किए, फिर अपने प्रोग्राम बनाने शुरू किए, फिर ये फेमस हो गए सडनली। एक्चुअली ड्रोन्स जब इंडियन मार्केट फ्लड हो गई, कम से कम 1 लाख से ज्यादा ड्रोन सडनली फ्लाइंग करने शुरू हो गए इंडिया में फॉर कमर्शियल रीजंस। फोटोग्राफी होनी शुरू हो गई, सम अदर things came up, then some wrong elements started using it, then फिर वर्ल्ड में इनका बहुत चर्चा हो गया। तो इंडिया में प्रोग्राम चल रहे थे जो हमने पहले नहीं बताए थे, या अंडर थोड़ा सा नॉट अंडर कवर एग्जैक्टली, बट थोड़ी सीक्रेसी में चल रहे थे। पर धीरे धीरे क्या है कि अगर आप किसी के बारे में बात नहीं करते हो तो फिर अपनी ही, जैसे आपने बोला, लोग डाउट करना शुरू कर देते हैं कि आप कुछ सोच भी रहे हो इसके बारे में कि नहीं, क्या क्या हो रहा है इसके बारे में। तो जरूरी था थोड़ा थोड़ा बताना, और इसकी इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, टू शेयर दैट व्हाट आर वी प्लानिंग टू डू, व्हाट इज आवर टेक्नोलॉजिकल विजन। इट्स नॉट ए सच ए बैड थिंग, ओके। और इसमें जो R&D होती है ना, स्पेशली देयर आर, इन माय ओपिनियन, देयर आर नो फेलियर्स इन R&D, ओके। फेलियर्स होते हैं एस्टेब्लिश्ड चीजों में। लाइक अगर मैं कोई
आप मेरे को मैथमेटिक्स का एक सम देते हैं और उसमें मैं 2+2 4 की बजाय 22 लिख देता हूँ, तो वो फेलियर है मेरा, वो मिस्टेक है। पर अगर कोई नई मैथमेटिकल इक्वेशन इजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और उसमें एक बार वो नहीं बनती, दूसरी बार नहीं बनती, तीसरी बार नहीं बनती, तो यू कांट कॉल दैट ए फेलियर, राइट? बिकॉज यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू. So this word failure attached with R&D generally puts off people के इतने ये fail हो गया. That is evolution process, that is not failure, right? So we have to take it like that. इसीलिए R&D की cost इतनी high होती है, something. अब ये I don't know why can't we relate to it. अब fashion design देखिए, आप ब्रांड देखिए, प्रादा ब्रांड देखिए, आप ब्लू विटॉन ब्रांड देखिए, आप और हमीज ब्रांड देखिए, कितनी महंगी चीजें आती हैं उनकी, करेक्ट? वो एक पीस इजाद करने के लिए 100 पीस वेस्ट करते हैं. नो, दे आर नॉट फेलियर्स इन देयर ओपिनियन, राइट? वो परफेक्शन है. दे वांट टू प्रूव समथिंग, दे वांट टू रीच ए पर्टिकुलर स्टाइल. एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉट फंक्शनली, राइट? सो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता एक स्टिच ना भी हो तो इट लुक्स एज गुड, डजंट रियली मैटर. बट व्हाट हैपेंस इज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि वो उनका स्टैंडर्ड है, उनकी सोच है कि भाई बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. और जब टेक्नोलॉजी में हम आ जाते हैं तो वो फंक्शनल बन जाती है. यू कांट हैव ए रॉन्ग थिंग बीइंग प्लेस्ड एनीवेयर. तो वो जो उसमें स्टिच जो है सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए है, टेक्नोलॉजी में वही स्टिच जो है वो फंक्शनली इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो उसको जब आप रिजेक्ट करते हो कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा से करें, इसको ये ठीक नहीं हुआ, ये इतना देर उड़ना चाहिए था नहीं उड़ा, ये ऐसे उड़ना चाहिए था वो वैसे नहीं उड़ा, तो उसमें क्या है कि वो हम रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं अच्छा नहीं ये एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हुआ. तो दैट इज नॉट रियली ए फेलियर, राइट? दैट इज एवोल्यूशन प्रोसेस. तो उसके चलते जितने भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं, हमने काफी बात कर ली है, पिछली घातक पे फुल एपिसोड किया. ओके, अदर ड्रोन्स अभी अदानी ने दृष्टि 10 स्टार लाइनर अभी ये दिए, जो इजराइल से थोड़ी सी हेल्प लेके फिर यहाँ बनाए. नेवी इज गोइंग टू यूज देम एटसेट्रा. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. डीआरडीओ इज डूइंग इट, हैज गॉट सम प्रोग्राम्स at different stages. Then getting a little more than that into, then you start getting into little confidentiality regime, I guess. But suffices to say that a lot is happening now. The problem is how are they going to be game changer in our kind of stance. So this is on the just about the briefly on the program, that is something happening in India or something not happening in India. क्योंकि अगर हम products की बात करनी शुरू कर देंगे तो फिर उसमें I mean you need an multiple sessions on that. Probably we'll do product by product someday. Yeah. इंटरेस्टिंग। क्योंकि हमने काफ़ी कुछ कवर किया है सर, वी हैव कवर्ड होल लॉट एंड अभी काफ़ी चीज़ें आपसे और सीखनी है हमको, व्हिच इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर, अभी जो ड्रोन का एप्लीकेशन है सर, इन इन एक्चुअल बैटलफील्ड सिनेरियो, क्योंकि अभी 2 वॉर्स चल रही हैं, वी हैव सीन देम बीइंग अप्लाइड प्रीटी हेवीली एक्चुअली, प्रीटी एक्सटेंसिवली। एंड फॉर एग्जांपल अगर कल रात का जो ईरान ने अटैक किया है in towards Pakistan, they've used ballistic missiles as well as drones. So it's very interesting that we see, the drones being accompanied by ballistic missiles. एक तो cost factor है sir. What else does come into play sir? नहीं, कॉस्ट फैक्टर लाइक जैसे इवन जब हम घातक कर रहे थे तो आई हैड डिस्क्राइब दैट टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, डेप्थ ऑफ मैगजीन एंड एडवर्स एक्सचेंज रेशियो फॉर द एनिमी, करेक्ट? एक तो आपकी मतलब अगर चीप ड्रोन्स हैं तो आप कितने ही उड़ा सकते हैं. रूसी की रिपोर्ट है ऑन यूक्रेन रशिया पे कि यूक्रेन एट वन टाइम वाज लूजिंग ऑलमोस्ट 10,000 ड्रोन ए ईयर पीछे से. दैट्स 300 ऑलमोस्ट अ डे, राइट? Okay, now what happens is this is very very or not 300, I mean whatever it 1 lakh drone, it's almost 300 drones a day. Okay, so if you can lose so much drones, I mean 1 lakh drones a year, okay, then that means you can afford a hell of a lot of them. Okay, and now, and like we said that if you have to use a missile like Aster or a multi-million-dollar missile to down one drone, then it's a very very adverse exchange ratio for the enemy. So that is how they become important. And you want to saturate enemy air defenses को आपने saturate करना है, ballistic missile से ध्यान हटाना है, कहीं और लगाना है. अब जैसे ballistic missile आ रही है, drones भी आ रहे हैं, डैमेज कर सकते हैं, तो आप किस पे फोकस करेंगे? तो वो सैचुरेशन के लिए सारी चीजें इकट्ठी यूज होंगी. ये है व्हाई दे आर यूज्ड one by like together in that scenario. Okay, so that is that.
नाउ टॉकिंग ऑफ आर सिनेरियो, अगर आप इंडिया की बात करें, हम जैसे माउंटेन रीजन में, इफ यू वांट टू स्टार्ट ऑन माउंटेन, और बिफोर दैट एनी अदर क्वेश्चन वी कैन आंसर दैट, और शुड वी स्टार्ट नहीं सर, टॉकिंग अबाउट मेन दो माउंटेन? ही हैं सर, माउंटेन्स एंड जंगल्स, ये दो का एक काफी दो का एक, रेफरेंस हाँ। आता है बहुत। हाँ जी, सो तो वी कैन जितने भी टेक इट हमने, एज यू लाइक। या सो जितने क्या है कि आपने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, ओके, बिकॉज आई आई एम सेइंग बिकॉज आर हेडिंग ऑफ योर फ्लायर वॉश के भी माउंटेन्स में क्या इफेक्टिवनेस है की, राइट? So what happens is, and a lot has been talked about, drones, various ways, planes में generally their use has been highlighted in planes because that is how the terrains play out in world. इंडिया की क्या पिक्यूलरिटी है, क्योंकि हम अपने बारे में बात करते हैं कि हमें कैसे फायदा हो सकता है इनका। एक तो है कि एक टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ जानना एकेडमिकली, एक है उसकी एप्लीकेशन। इंडिया चैप्टर क्या है उसमें, आप आपके ऑडियंस हैं जो भी इंडियंस सुन रहे हैं, व्हाई व्हाई शुड दे हियर अबाउट इट, कि भी हाउ आर दे गोइंग टू बेनिफिट एज इंडियन सिटीजन्स, राइट? जब इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ती है तो आपका स्टॉक बढ़ता है। आई मीन योर एज एन इंडियन यू आर राइजिंग, यू आर फीलिंग हायर, सो आई शुड नो कि भाई मैं कैसे यूज कर सकता हूँ इनको, और इसमें से बहुत लोग होंगे जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडस्ट्री को, वेरियस पीपल। सो दैट इज व्हाई आई फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट। ओके, इंडिया की क्या बात है कि भाई हमारा बॉर्डर जो है तकरीबन 6,800 किलोमीटर का बॉर्डर है, 6811 टू बी प्रिसाइज, बोथ विद इंडिया एंड बोथ विद चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, नाउ ये 6,800 किलोमीटर में से लगभग 4,000 किलोमीटर जो है वो माउंटेनस टेरेन में है। नाउ दैट इज अ ह्यूज रेशियो। That means two-thirds of your border is mountains, and mountains not like very benign mountains. ऐसे नहीं कि ऐसी माउंटेन्स जैसे छोटी छोटी हिल्स है स्कॉटलैंड में और समवेयर। इट इज माउंटेन्स 9,000 फीट से लेके 20,000 फुट तक जो नॉर्मल है, वो टेरेन की वेरिएशन है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेस टू। अब 4,000 किलोमीटर ऑफ रीजन जो है वो अगर ऐसे प्ले आउट करता है तो आपको सोचना है उसमें आप कैसे यूज करेंगे ड्रोन्स को। और सिर्फ माउंटेन्स की टेरेन का इशू नहीं है, उसके साथ में कोल्ड क्लाइमेट है। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। अगर आप द्रास सेक्टर की बात करें या कारगिल सेक्टर बात करें तो -20, -30, -40 तक टेम्परेचर प्ले आउट करता है। ओके, और इवन मोर हैबिटेबल प्लेसेस हैव गॉट वेरी लो टेम्परेचर्स। तो ये जो combination of high mountains and low temperature, it's a very unique kind of stuff which we have to tackle with. Okay, now जैसे हमने बोला कि हमने ये हिरॉन्स और सर्चर इंडक्ट किए कारगिल के बाद, ओके, बट इनको तब क्विकली इंडक्ट किए, जो कैपेबिलिटी थी वो कर ली। इनके बेसिकली थोड़े इश्यूज थे इनमें, एक तो लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू जिसको बोलते हैं, इनके जो पेलोड थे वो फील्ड ऑफ व्यू लिमिटेड था। ओके, और उसमें से आप रिकॉनेसेंस कर सकते हो, सर्वेलेंस नहीं कर सकते। जैसे टॉर्च लाइट का काम ले सकते हो, फ्लड लाइट का काम नहीं ले सकते। आपको टॉर्च लाइट किस में काम आती है, आपको पता है आपकी कोई चीज है यहाँ गिर गई, आपके हाथ से कुछ चीज गिर जाती है, आपको पता है यहीं कहीं गिरी है, तो यू टेक ए टॉर्च एंड यू कैन फाइंड आउट कि कहाँ गिरी है। यू हैव द प्री नॉलेज कि यहाँ कुछ है, एंड यू कैन एस्टेब्लिश कि यहाँ कुछ है। फ्लड लाइट किस लिए चाहिए? जैसे जेल का कंपाउंड है, उसमें आपको नहीं पता कैदी कहां से भागने की कोशिश करेगा। यू वांट टू कीप एंटायर एरिया अंडर सर्विलेंस, कहीं भी कुछ हो सकता है, तो उसमें टॉर्च काम नहीं करेगी ना फिर आपकी। यू नीड ए फ्लड लाइट। सो ये जो बड़े बड़े ड्रोन हैं, हेल जैसे हम रीपर, प्रीडेटर इनकी बात करते हैं, सो दे कम इनटू फ्लड लाइट काइंड ऑफ कैटेगरी, वेयर एज व्हाट वी इंडक्टेड वाज इन ए टॉर्च लाइट काइंड ऑफ कैटेगरी। ओके, फिर इनमें कम्युनिकेशन का इशू था, ओनली लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन थी। ओके, और जो रेडार से, जैसे सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, स्लो स्पीड है, बड़े हाई बैंड में, केयू बैंड में काम करता था। केयू बैंड का मतलब ये जो के बैंड है, इट्स ए ऑलमोस्ट 15 टू 27 गीगाहर्ट्ज जो इसमें काम करता था। तो उसमें क्या है कि फॉलेज को पेनिट्रेट करने की क्षमता नहीं थी इतनी कि बहुत ज्यादा फॉलेज पेनिट्रेट कर सके। तो ऑल ये लिमिटेशंस थी, बट स्टिल दे प्लेड आउट वेल। अब हिल रीजन क्यों फोकस में आ रहा है? नाउ नाउ नॉट दैट आई एम रिवीलिंग समथिंग कॉन्फिडेंशियल, तो आई like to cite a report. Economic Times dated 11th August 23 ने रिपोर्ट दी थी कि IAF has deployed 4 Huron Mark II drones in the northern sector. ओके, उन्होंने नदर्न सेक्टर में ये डिप्लॉय किए, और उनका कमांडिंग ऑफिसर की स्टेटमेंट है उसमें कि अभी हम बहुत सारा, आई मीन ही इन्हें सेड के होल ऑफ इंडिया kept under surveillance. What he probably was meant was that the entire area of operation
जो उनको अकॉर्ड किया गया है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको उस पे सर्वेलेंस कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज वेपन्स भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो 17 अगस्त 23 टेलीग्राफ में ये रिपोर्ट किया गया था कि आर्मी ने 2000 ड्रोन फॉर सर्वेलेंस का ऑर्डर दिया है, और जो उसमें क्वालिफिकेशंस हैं स्पेसिफिकली मांगी गई हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड में इसको काम करना चाहिए। ओके, और वो क्वालिफिकेशंस देते हुए along with that it was mentioned incidents like Gilwan and other like that confrontations were mentioned in that कि भाई ऐसी situations के लिए हमें सर्वेलेंस के लिए ये ड्रोन चाहिए, उनमें ये होनी चाहिए। अभी now what we will do is we will tackle it under two parts. One is that what can these drones do in hills? अगर कोई पूछे कि ये क्या करेंगे, अगर हमने ले लिए ड्रोन्स तो हिल्स में क्या कर सकते हैं जो अभी नहीं हो रहा, राइट? और दूसरा, अगर लेते हैं तो फिर क्यों नहीं ले रहे, अभी तक क्यों नहीं लिए, चैलेंजेस क्या है, why did we have, we have been operating drones for such a long time, then why does Gilwan kind of thing still happen, or why are we not able to, why we are not able to seal our borders with drones or something like that, why can't we continue? So हम challenges की बात करेंगे कि drones को hills में operate करने के लिए क्या चैलेंजेस लगते हैं। अगर आप कारगिल वॉर की बात करें, लेट्स प्ले आउट सिनेरियो इफ वी हैड ड्रोन्स इन कारगिल। आई फाइंड इट द बेस्ट वे एनालॉजी वाइज कि अगर किसी को समझाना है कि भी ड्रोन्स हिली एरिया में क्या कर सकते हैं, तो मैं सिनेरियो पेंट करूंगा कि अगर कारगिल वॉर जो हमने लड़ी, मैं खुद पार्ट लिया उसमें, कि उस वक्त अगर हमारे पास ड्रोन्स होते, now I am calling them drone in a broad sense. They will comprise everything, from fixed wing drones to quadcopters to this that, I mean हर चीज को अलग अलग नहीं बोला जा सकता, तो with a common name we'll call them drone because it comes naturally to you, right? So let's say what was the Kargil का problem? Kargil में there are intrusions. Let's अगर we retrace history कि intrusions हुई जो undetected गए, that was a starting problem, और हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई हो गई। ओके, क्या लगा कारगिल ऑपरेशन में, अगर मैं सम अप करूं, और ये इंडियन डिफेंस रिव्यू की एक रिपोर्ट है 2019 की। ओके, इंडियन डिफेंस रिव्यू में ने लिखा, समराइज किया कि इसमें ना 520 सोल्जर्स वर किल्ड इन एक्शन, 520 soldiers. Okay, and including our pilots who lost their life after ejection or in the helicopter and air crew. It cost us 2 fighters, I mean 520 soldiers killed in action, more than 1500 wounded, cost us 2 fighter planes, 1 helicopter, 6500 air sorties were flown. Okay, जिसमें कितने हजारों ही कन्वेंशनल बॉम्ब्स हमने यूज किए, नंबर ऑफ एलजीबीज यूज किए, और 2,50,000 artillery shells फायर हुए। I mean this is recorded. ओके, इट्स देयर इन पब्लिक डोमेन। नाउ अगर इतना कुछ हुआ कारगिल में, अगर हमारे पास ये ड्रोन्स होते तो ये कैसे प्ले आउट करता, ब्रॉडली अगर हम सोचें तो क्या क्या होता। एन ओकेजनल रिकॉनेसेंस सॉर्टी जो थी, अगर ड्रोन्स होते तो वुड हैव टोल्ड यू अबाउट इंट्रूजन्स मच इन एडवांस। यू डिडंट हैव टू लॉन्च दैट पेट्रोल के जाके देखो कहाँ है, किसी आपको गडरिये ने बोला कि भाई वहां पे कुछ हो रहा है, आपने भेजा, हमारी पेट्रोल भी एम्बुश हो गई, वी लॉस्ट पीपल, वेरी ब्रेव सोल्जर्स देयर आल्सो इन वेरी बैड कंडीशंस, राइट? Now this, somebody, some report would have come that something is happening, another sortie would have confirmed it। अगर लेट्स से इंट्रूजन हो रही थी, और फिर अगर आपके पास उस वक्त ये फायर, आई मीन आर्म्ड ड्रोन होते, तो यू कुड हैव निप्ड व्हाट वी से इविल इन द बट। okay, even okay, play out further, let's say intrusions हो गई, I mean let's come to war per se। okay, अब टारगेट रिकॉग्निशन was such a problem जब शुरू शुरू में, कि वो बंकर्स को आइडेंटिफाई करने में इतनी प्रॉब्लम हुई, आई वाज माई सेल्फ इन्वॉल्व, कि अब आर्मी आपको नीचे से बता रही है कि भाई वो 0.4500 0.5840 पॉइंट फलाना, नीचे से हिल्स जब आप देखते हो तो 1000 फीट का जो डिफरेंस है या 2000 फीट का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा लगता है। ओके, जैसे आप मार्केट में चल रहे हो, आप बता सकते हो कि ये आदमी लंबा है, ये मिडिल हाइट है, ये आदमी शॉर्ट है, करेक्ट? पर आप किसी को आईफल टावर पे चढ़ा दो अभी, ओके, और उसको बोलो ऊपर से बताओ कितने लोग लंबे हैं, कितने शॉर्ट हैं, कितने मिडिल हैं, तो नहीं बता सकेगा ना, एवरीबॉडी विल लुक ऑलमोस्ट द सेम। एग्जैक्टली सेम थिंग वाज हैपनिंग। सो दिस हाइट्स व्हिच वर टोल्ड के ये इतनी है, इतनी है, इतनी है, जब आपने ऊपर जाके एयरक्राफ्ट्स में देखी तो इट वाज जनरली अ प्लेन एरिया, यू कुडंट मेक आउट कि व्हिच हिल इज हायर, व्हिच हिल इज लोअर। ओके, सो लॉट ऑफ टाइम
was wasted in just recognizing targets. Till we inducted Mirage 2000, they did some LGB sorties. वो उन्होंने फिल्म की एरियाज आर्मी वालों के साथ बैठे कि इनमें से बताओ कौन सा है. That is how we identify target. And let's imagine if the drones were there. क्या लगता, दो चार sorties just to recce that area कम आप बैठते हो और आपको बिल्कुल सामने बताते कि भाई ये टारगेट है, यहाँ पे ये है. ना ही सिर्फ आपको टारगेट बताते, आपको ड्रोन कोऑर्डिनेट्स बताता उनके कि ये यहाँ पे है और ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके. ओके, एंड इफ रिक्वायर्ड इट कुड हैव डन लेजिंग फॉर यू. लेट्स से जैगुआर आता है अपने एलजीबी लेके, उसको लेज करता वो ड्रोन, विद मिनिमल एफर्ट, you could have achieved so much. Okay, बंकर्स में कौन लोग हैं? दैट ड्रोन कुड हैव गॉन, जैसे 3 इडियट मूवी में दिखाते हैं, दैट ड्रोन विंडो से जाके आपको बता देता कि इस बंकर में इतने लोग हैं, इतने बचे हैं, इतने नहीं बचे. करेक्ट. बहुत से ड्रोन लॉस्ट हो जाते हैं उसमें, नो डाउट अबाउट इट. ओके, बट देन we could have afforded many cheap drones, not a problem. Okay, now this is how probably that whole thing would have played at a much lesser cost. Okay, but now this is easier said than done, because it's also equally true that अगर आपके पास ड्रोन होते तो हो सकता है उनके पास भी ड्रोन होते इस वक्त. So what I'm coming to is that if you create a monster for yourself, if you do not think of its antidote, then it is going to come and eat you up, and in a worse manner. Okay, now play the other scenario कि आपके पास तो ड्रोन से, जो मैंने बताया, सब कुछ कर सकते थे. अब वो जो बंदे बंकर्स में बैठे हुए थे, उनके पास भी ड्रोन अगर होते, तो could you have deployed your artillery the way we did? Could you have soldiers, climbed the hills the way they did? किसी को चढ़ने नहीं देते हो यार. Okay, they would have bombed all your artillery. They would have, provided them much accurate fire, signals. ये जो ऊपर से बता रहे थे उधर, everything they could have done. Now, probably fighting Kargil would have been much worse, provided we had anti-drone capability. This is what, it's very important. जब हम किसी चीज के बारे में, किसी चीज के पीछे जाते हैं ना, तो फिर भेड़ चाल की तरह उसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं. उसका हम भूल जाते हैं कि कोई और भी ये चीज बना सकता है. तो क्या है कि इवन ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है. ओके, एक मैंने पोस्ट भी डाली थी पीछे से कि एक ना DSCI होता है यूके में, तो किसी ने लिखा भी किसी भी स्टॉल पे चले जाओ, वो ना हुक से ड्रोन वर डैंगलिंग, कि भाई ये ड्रोन है. आप एशिया, ये एरो इंडिया शो में भी देखा कि हर एक स्टॉल पे ड्रोन है, ड्रोन है, ड्रोन है, ड्रोन है, बट वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस टू एंटी ड्रोन मेजर्स. तो जब आप खुद ड्रोन बनाते हो, तो आप ये नहीं सोचते कि यार दूसरे के पास होगा तो फिर मेरा क्या होगा. तो उसी के साथ साथ इक्वल फोकस इज रिक्वायर्ड ऑन एंटी ड्रोन मेजर्स आल्सो, व्हिच वी नीड टू लर्न. व्हाइल फोकस इज देयर ऑन making high class drones, what is happening in the anti drone scenario? Okay, that gets waylaid. Okay, so we'll come to that, how this is. So this is what they could have done in war times. What can they do for us now? Like, it's not always Kargil war. So somebody will ask कि वो तो ठीक थी, अब रोज रोज कारगिल थोड़ी होगा, अब क्या करेंगे ड्रोन? what will they do now in mountainous terrain, right? अब क्या है कि डेली सर्वेलेंस, जो तब मैंने बोला कि शुरू में, ताकि कारगिल ना हो, वो अचीव कर सकते हैं. दीज ड्रोन्स कैन एक्चुअली कीप ए गुड सर्वेलेंस. अब यार टेररिस्ट इतने पुश होते हैं, रात को होते हैं, दिन में होते हैं, नालाज के थ्रू होते हैं, और इतनी इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस हैं कि आपको फिजिकली गार्ड करना नामुमकिन है. अब सोल्जर खड़ा भी है, लेट्स से ही स्टैंडिंग गार्ड. आपने कभी ना, कई वीडियोस लोग डालते हैं इसमें, जैसे होली दिवाली पे या न्यू ईयर पे दिखाने के लिए कि भाई दिवाली पे भी हमारे सोल्जर्स देखो गार्ड खड़े हुए हैं. वो एक जैसे आंधी चलती है बर्फ की. Have you seen that? आंधी चलती है बर्फ की, अब उस पे वो पीट करके खड़ा हुआ है, उसको पीछे लग रही है, ऐसी कंडीशन में खड़ा तो है वो, बट इफेक्टिव सर्वेलेंस इज पॉसिबल और नॉट. ओके, जो टेररिस्ट मरने के लिए ही आ रहा है, ही विल ब्रेव इट आउट. ही विल से कि यार, और उसके ना आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है, आगे नहीं जाएगा तो पीछे से मरेगा, तो ही विल टेक ए चांस, ही विल कम थ्रू. बट दिस guy's effective surveillance is very, very difficult. So if you have drones now deployed, let's say in those areas which can cover these crucial gaps, then they can help you a great deal. And on top of that, if they are armed, so what is this drone going to do? जैसे ये एंटी टेररिस्ट के लिए करते हैं, ईरान में करते हैं या इराक में करते हैं, कि ड्रोन मॉनिटर कर रहा है, उसको पता चला इसमें है स्लोवेनी, तो वहीं से मिसाइल मार, इट विल न्यूट्रलाइज.
So same capability can be created in our crucial positions. Okay, वो एक बात हो गई. दूसरी, डे टू डे लॉजिस्टिक्स, हम अभी भी म्यूल्स यूज कर रहे हैं यार राशन ऊपर पहुंचाने के लिए, क्योंकि आदमी नहीं लेके जा सकते, सोल्जर खुद नहीं लेके जा सकता, उसकी सस्टेनेंस करनी है, और हेलीकॉप्टर शॉर्टेज हमेशा पॉसिबल नहीं होती हैं उन वेदर्स में. ओके, क्योंकि कभी खुला वेदर, कभी नहीं खुला. ओके, और दिन रात की कैपेबिलिटी नहीं है. तो व्हाट हैपेंस इज these drones, mass scale logistic drones, can help you stockings at those positions, and they are going in for it. You know that army is now trying to induct drones, logistic drones, what they call, so that they can take these things up. Okay, so if you have good surveillance, if you have good maintenance capability over these places, then a lot of things can be played out, and you can actually avoid a situation like Kargil, Galwan. But nothing comes easy. You know what happens is, I mean, how effective they are, what are the challenges in this. फिर हम ये इतना easy है तो करते क्यों नहीं? You know, हमने, हमारे पास राजस्थान में इतने ड्रोन्स हैं या पंजाब में इतने ड्रोन्स हैं, तो लेके जाके डिप्लॉय कर दो उनको, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि नाउ वेरियस प्रॉब्लम्स हैं. एक ये समझना जरूरी है कि क्यों नहीं हो रहा ये, कि उसमें एक परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम है, एक फ्लाइट स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, बैटरी लाइफ की प्रॉब्लम है, और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम. छोटा छोटा इसके बारे में मैं बताऊंगा, बाकी हम क्वेश्चन आंसर में ले सकते हैं अगर किसी ने ज्यादा जानना है. तो परफॉर्मेंस का क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, एयर रेरिफाइड होती जाती है, कम डेंसिटी होती जाती है उसकी, और वो ज्यादा परफॉर्मेंस, ज्यादा वो चाहिए लिफ्ट कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए. उसमें क्या है कि जो प्रोपेलर, या जो हम प्रोपेलर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं. ओके, बिकॉज अगर आप फिक्स विंग की बात करें तो वो वैसे ही 7-8 किलोमीटर पे प्लेन से टेक ऑफ करके ऊपर जा सकता है, पर ड्रोन जो आपको वहीं से लॉन्च करना पड़ेगा. यू कैन नॉट लॉन्च ड्रोन फ्रॉम आदमपुर एंड आस्क हिम टू फ्लाई ओवर दैट क्वाडकॉप्टर काइंड ऑफ स्टफ. ओके, इट्स ओनली फिक्स विंग एयरक्राफ्ट कैन गो. ड्रोन यू विल हैव टू यूज लोकली, करेक्ट, बिकॉज लोकल फॉर्मेशंस के पास होंगे. ओके, सो क्या है कि अगर वहां पे लिफ्ट प्रोड्यूस करनी है उतनी, तो अगर वो जो आरपीएम है उसकी एक्स लगती है प्लेन्स में, तो एक्स प्लस 0.5 और एक्स प्लस 0.25 उसको लगानी पड़ेगी ऑल्टीट्यूड पे उतनी ही लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए. तो उतनी ज्यादा पावर चाहिए. ओके, और अगर वो एक स्पीड से ज्यादा रोटेट करता है तो अदर इश्यूज स्टार्ट कमिंग अप, ऑफ some shock waves, etc. All the tamasha starts coming in. So performance of the drone is severely hampered when you are operating in rarefied atmosphere. So what do you need to do? You'll probably need to make more of those propellers, within that much, and which then again weight issues, this issue, that issue, all those things, operating cost issues, वो हो जाता है. और या फिर आपको उसकी परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आपको हाई लेवल, हाई पावर बैटरीज यूज करनी पड़ेंगी. अब बैटरीज का क्या इशू है? बैटरीज की प्रॉब्लम है कि कोल्ड वेदर में इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है. करेक्ट, अगर आप कहते हैं 0 फ़ारेनहाइट पे ले जाओ उसको, या लेट्स से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओ, तो कम से कम 20 to 25% बैटरी की जो कैपेसिटी है पावर प्रोड्यूस करने की, वो कम हो जाती है. Okay, so now what happens is, when that capacity reduces, it is not going to produce the same kind of power. Also another issue is, बैटरी स्टार्ट ही नहीं होगी यार ठंड में. आपने देखा सुबह कार की बैटरी सर्दियों में स्टार्ट नहीं होती कई बार, है ना. सो दे अनलेस दे आर वेरी हाई क्लास बैटरीज. अब इसमें क्या है कि जो ट्रायल्स होते हैं हमारे, कई बार ट्रायल्स उनके फेल हो जाते हैं बेचारे, जो करने आते हैं इंडस्ट्री के बंदे ट्रायल, और वो ना ड्रोन्स को, बैटरी को ऐसे लपेट के वार्म रख के आके उसी वक्त निकाल के ड्रोन में फिट करके उड़ाएंगे. थोड़ी सी भी ज्यादा एक्सपोजर हो गया तो वो नहीं चलेगा. अब नाउ यू कांट हैव दिस मच ऑफ कमर्शियल प्रोसीजर्स, लेट्स से व्हेन यू आर गोइंग टू यूज ड्रोन्स फॉर टेक्निकल रीजंस, कि भाई आपको तो चाहिए वो कि निकाला, लॉन्च किया, इमीडिएटली उड़ गया. अगर आपको इतनी केयर करके एक छोटे से ड्रोन को तैयार करना है एक्सेट्रा, तो वो प्रॉब्लमेटिक है. तो ये चैलेंज है जो पीपल आर ट्राइंग टू ओवरकम. Another issue which becomes is that very interesting is the stability and flight characteristics. Okay, थोड़ा समझने वाली बात है कि जब एयरक्राफ्ट आपको बताता है कि मैं 20,000 फुट पे हूं, वो कैसे बताता है 20,000? इट मेजर्स द स्टैटिक प्रेशर. हम जैसे हम ऊपर जाते हैं, प्रेशर कीप्स ऑन ड्रॉपिंग. अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीबार फॉर 30 फीट. आप 30 फुट ऊपर चढ़ते हो तो 1 मिलीबार प्रेशर कम हो जाता है.
तो हमारे जो ऑल्टीमीटर्स होते हैं या जो भी है 1013.2 मिलीबार पे सेट होते हैं, जो सी लेवल स्टैंडर्ड प्रेशर है, करेक्ट। तो डिपेंडिंग ऑन प्रेशर वेरिएशन वो उनको एडजस्ट किया जाता है। तो जब मैं सपोज करो 5000 फुट पे चला गया, तो वो कैलकुलेट करके 30 फीट पर मिली बार उसको कैलकुलेट करेगा, उस पे जो प्रेशर है वहां पे उसको करके बताएगा कि आप 5000 फुट पे हो। सारे ही एयरक्राफ्ट ऐसे फ्लाई करते हैं, कोई नोबडी इज मेजरिंग लेजर के साथ या रेडियो ऑल्टीमीटर के साथ ऑल्टीट्यूड, इट इज स्टैटिक प्रेशर। It is assumed that in a wide area that pressure remains constant. अब देखो दो जहाज आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, अगर वो उसका प्रेशर कुछ और है, इसका प्रेशर कुछ और है, तो दे विल बी अ डिफरेंट ऑल्टीट्यूड बिकॉज दे आर गोइंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर। माउंटेन्स में क्या इशू होता है कि जब वैली की बात आप करते हैं तो देर आर सडन चेंजेस इन स्टैटिक प्रेशर बिकॉज ऑफ माउंटेन वेव्स, बिकॉज कोई हवा आई, कोई ऐसे हुआ तो प्रेशर इधर बढ़ा इधर कम हुआ। तो जो ऑल्टीमीटर या जो ड्रोन है जो इस बेस पे चल रहा है, मान के आपको आपने उसको बोला कि आपको 500 मीटर पे चलना है सपोज एलिवेशन के हिसाब से, या इतने ऑल्टीट्यूड पे चलना है, अगर वो रेडियो ऑल्टीमीटर से मेजर नहीं कर रहा है विच इज एक्सपेंसिव और प्रेशर ऑल्टीट्यूड पे जा रहा है, तो वो ऑल्टीट्यूड मेन करना ही प्रॉब्लम मेंटेन प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। ओके, दूसरी एक टिपिकल बात होती है नेगेटिव ऑल्टीट्यूड की। वो क्या है, आपने देखा है कि जब मैं यहाँ बैठ के आप ड्रोन लॉन्च करते हैं, ड्रोन ऑलवेज गेन्स हाइट फर्स्ट, सो इट सीज ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह और एक अपनी सेफ्टी हाइट सेट करता है कि भाई ये सेफ्टी हाइट है। अब वो सेफ्टी हाइट से नीचे ड्रोन को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप हिल पे बैठे हो और you want to take it into the valley and you launch a drone and it gets up, it sets a safety height for itself, then operating it in the negative altitude is also a challenge. Okay, line of sight communication is another issue कि आप हिल के इस तरफ हैं, आपको ऑपरेशन करना है या देखना है हिल के दूसरी तरफ, ठीक है। तो अगर ड्रोन के साथ आपकी लाइन ऑफ साइट नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, इशू होगा। उसके लिए फिर आपको एक और ड्रोन चाहिए बीच में जो सिग्नल रिले करे, करेक्ट। सो विच इज एडिंग टू द प्रॉब्लम। ओके, अब आप बोलेंगे कि सेटकॉम हो सकती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकती है बट छोटे ड्रोन्स के लिए प्रॉब्लम है। बड़े ये सारे रीपर प्रेडेटर्स वगैरह सेटकॉम पे ऑपरेट करते हैं, घातक होगा कल को या तपस्या, ये जो बड़े बड़े ड्रोन्स हैं दे ऑल ऑपरेट ऑन सेटकॉम। बट अब हर एक छोटे ड्रोन के लिए अगर आपको सेटकॉम कनेक्शन चाहिए, तो जब हम वो बात कर रहे थे कि डेप्थ ऑफ मैगजीन, तो वो क्वालिटी खत्म हो जाएगी उसकी। फिर ड्रोन इतने महंगे होने शुरू हो गए टैक्टिकल, तो देन देयर इज ए प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाइल इन द प्लेन्स यू कैन टेक दिस फ्लाई दिस ड्रोन, जितना भी आप कर सकते हैं यू कैन डू दैट, बट व्हाट हैपेंस इज इन हिल्स दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। फिर क्या है कि आपको वो लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह तक, आप किस पे रिलाई करते हैं, जीपीएस सिग्नल पे। अब हिल्स में अगर जीपीएस सिग्नल इंटरप्ट हो रहा है जगह जगह पे, आपका नॉर्मल सिग्नल नहीं आता, आप फोन लेके जाते हैं तो हिल्स में इंटरप्शन होती रहती है सिग्नल की। तो अगर जीपीएस सिग्नल इंटरप्टेड है तो इवन इट्स नेविगेशन विल बिकम ए प्रॉब्लम। So what happens is it's not easy, all these challenges are being worked upon. लोग दिन ब दिन काम करते हैं इस पे, that how to, not that you can't have the solutions, by laws of physics you can develop something, but how to keep it under control and to develop these solutions at low cost is the biggest challenge. Okay, कि उसको कैसे वो किया जाए। ओके, नाउ ये चीजें हैं जो हमने बोला कि भाई इनको ऑपरेट कैसे होगा और ये चैलेंज क्या है इनमें। ओके, now when you come to anti drone, we said anti drone facilities or capabilities equally important। कई तरह के हैं। अब जैसे ड्रोन की एक क्या है मास्टर लोग कि एक ड्रोन में आरएफ पे काम करता है, लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आप उसको गाइड कर रहे हो। ऑटोनॉमस आप आरएफ जैमर्स लेके आ गए, सपोज एंटी ड्रोन के मैं आरएफ जैम कर दूंगा, जैसे स्वाम जब हमने बात की थी, जो भी कम्युनिकेट करते हैं ड्रोन आपस में, वो उसको आप जैम कर सकते हो। पर अब क्या है कि ऑटोनॉमस ड्रोन वो बोलते हैं कि भाई ऑटोनॉमस ड्रोन है, उसको आपने प्रोग्राम कर दिया, वो यहाँ से वहां जाएगा, वहां से यहाँ जाएगा। और अगर उसने अपना उसका आरएफ जैम भी कर दिया तो क्या होता है, ड्रोन का प्रोग्राम पहले क्या था कि वो ना गेट होम प्रोग्राम होता है। जैसे मैंने यहाँ से लॉन्च किया तो बोला कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कहाँ जाना है या आपका सिग्नल इंटरप्ट हो गया है तो प्लीज यहाँ वापस आ जाइए। जैसे आप नॉर्मल अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप यहाँ से वहां जाओ, उसको अगर रास्ता भूल गया, उसको पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो क्या घर वापस आ जाना, वापस, करेक्ट। सो नाउ what they have done is, what these guys, smart guys do it, वो जो टारगेट सेट है ना, वो जो जहां पे आपको ड्रोन लेके जाना था और फोड़ना था, वो उसको होम प्रोग्राम कर देंगे आप।
तो आप क्या बोलेंगे कि ये जाओ, अगर किसी ने जैम कर दिया तो बोलेगा होम जाना है मेरे को, तो उसको सिस्टम बता रहा है कि तेरा होम वहां है, तो वो ही विल गो टू द टारगेट इन एनी केस. ओके, That's सो that's 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 very interesting, huh? interesting. And another thing happens is that now the guys, the other people, what they will do is they will target the jammer first. आपने jammer क्या किया? वो jammer ground पे लगाए हुए हैं. अब इजराइल में जैसे हमास अटैक हुआ, what did they do? Mm. They first took out all the jammers. Correct. So now if your jammers are going to be taken out, you need something else. You just can't induct some jammers and say कि मैं ये RF jam कर दूंगा. मैंने आपने box tick कर दिया कि मेरे पास एंटी जैमिंग, मेरे पास जैमिंग कैपेबिलिटी है और मेरे पास एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी है. ठीक है ना? पीपल नीड टू क्वेश्चन दिस कि भाई इफ दिस हैपेंस देन व्हाट. ओके, then you comes this kinetic kills आजकल, that you have to physically destroy that drone. Okay, Mm. some RFIs keep coming out. अभी recently I think Air Force or people are asking कि भाई इतने किलोमीटर तक मेरे को destroy करना है drone. Now it is a threat. It is like an aircraft. Okay, you can't just get away with jamming the aircraft. You have to just destroy somehow with reasonable cost. Destroy तो कर सकते हो आपने. You don't start destroying it with Akash missile or those kind of things. Okay, you'll run out of things. So what happens is you need some kinetic kill capability. अब people are developing that capability कि भाई एक ड्रोन, आपने भी चीप ड्रोन लॉन्च किया कबड्डी की तरह, and that guy will just go and crash into that drone. Okay, वो Mm. खुद भी मरेगा, उसको भी मारेगा, so it will not allow this to come back. Okay, there are advanced capabilities also. Now there are good radars now to take man out of the loop. Now आजकल क्या हो रहा है, AI we keep talking about. Okay, AI में क्या होता है कि और या क्यों ये आ रही है ऑटोनॉमस ऑपरेशंस के, आदमी थक जाता है, कोई भी आदमी सेम थिंग अगेन एंड अगेन, दो चीजों से थकता है, या तो उसके पास बहुत काम है या फिर उसके Mm. पास कोई काम नहीं. Both the things tire you out. Yeah. Correct. The So you need a second good one is worse. वर्स, सेकंड वन इज वर्स. ओके, Yeah. कि आप बैठे हुए हो, मैं देख रहा हूँ ड्रोन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ड्रोन आ ही नहीं रहा यार, पिछले 1 महीने से नहीं आया है ना. तो आई गेट कॉम्प्लेसेंट. मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी भी नहीं आएगा. कितने हमने किस्से सुने हुए हैं कि लाइट गई हुई है एंड समबडी, इफ यू आर नॉट केयरफुल, समबडी ट्राई टू फिक्स सम वायर कि अभी थोड़ी आएगी लाइट और तभी आ गई. अब मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, आजकल तो कोई नहीं करता ऐसा. इतना पहले आता था जब हम बच्चे थे ना कि इलेक्ट्रिक्यूट हो गया, वो प्रेस चल रही थी, उसका कुछ लूज था, लाइट नहीं है, तो क्योंकि घंटों लाइट नहीं आती थी तब. करेक्ट. तो उसने कुछ फिक्स करने की कोशिश की, मैं फटाफट कर देता हूँ बिकॉज ही डिडंट टेक केयर एंड तभी लाइट आ गई. ऐसे ही ड्रोन है. आप 2 महीने से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि ड्रोन आएगा, ड्रोन आएगा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया. तो आपको कुछ चाहिए, आपको कोई कॉल आ गई, आपका कुछ हो गया, यू विल से कि इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ विजिल 24/7 विद द सेम काइंड ऑफ alertness. Only machine can do it, which is programmed to do this. Now this is indifferent to whether drone has come or not come. It is alert 24/7 period. So you have to induct those systems के भाई जो continuously surveillance पे रहते हैं कि anything may come, इसको नहीं छोड़ना है. Okay, so you have a good radar which can see far, which can discriminate between two objects close by you, which can अब क्या है कि ड्रोन स्टेशनरी हो जाएगा एक जगह पे. रेडार्स भी जो हैं इनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं. कई लोग आपको रेंज बताएंगे, कई लोग सिर्फ स्पीड बताएंगे. जैसे आपकी जो स्पीडो कैमरा जो आप पकड़े जाते हैं हम लोग उस पे रोड पे, दैट गाइड डजंट टेल यू रेंज, इट डजंट टेल यू हाउ फार यू आर, इट ओनली टेल्स यू हाउ फास्ट यू आर कमिंग. करेक्ट. So it is just, it has got a frequency, it's a continuous wave kind of radar, but frequency modulation, it doesn't do to tell you कि भाई आप कितनी दूर हैं. Correct. So different kind of radars are available, which can tell you how far you are, how fast you are moving. पर आप एक जगह पे स्टेशनरी हो गए. इन सब रेडार्स में ना एक लॉजिक होता है कि स्टेशनरी चीजों को ये रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं तो फिर सारी बिल्डिंग दिखानी शुरू कर देगा आपको. पेड़ करेक्ट. पत्ते बिल्डिंग एवरीथिंग है सर. पेड़ पत्ते सब कुछ दिखाएगा, है ना. तो आप क्या बोलते हैं कि भाई जो चीज मूव ही नहीं कर रही उसको नकार दो, ठीक है, उसको छोड़ दो. तो अब ये ड्रोन क्या है, एयरक्राफ्ट में इसी कैपेबिलिटी नहीं थी, उसके लिए रडार काम करता था. अब एयरक्राफ्ट जो फिक्स विंग आपने लॉन्च किया, ओके, उसको तो फॉरवर्ड चलना ही चलना था, नहीं तो ना जहाज हवा में खड़ा नहीं हो सकता था. करेक्ट. बट ये जो ड्रोन है ये एक जगह पे खड़ा हो जाएगा. ओके, अब यू नीड ए गुड रडार विच कैन डिटेक्ट इट्स प्रोपेलर रोटेशन. दैट मीन्स उतनी डॉपलर शिफ्ट डिटेक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसमें.
Okay, how Doppler shift works, I mean, people know it, otherwise we can discuss Yeah. later. So it can detect all those things. The और फिर वो क्या करेगा, vibration, vibrations, I mean the movement. Okay, everything, sir. now Huh. what, everything, and now what happens is it will launch another drone, which is this killer drone, let's say. Okay, Hmm. and now this killer drone either can go and attack, get into that drone, or there are also now these things are available, net catchers, that it comes and throws a net on the drone. There are two capabilities. अगर वो ड्रोन भारी है तो नेट उस पे गिरा, डाल के छोड़ देगा. कैसे नेट छोड़ता है, यू सी इट्स, लाइफ कम्स फुल सर्कल. पुरानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मूवी देखो, एक ना मूवी थी चार्ली चैपलिन की, इट्स अ ग्रेट वर्ल्ड, और वर्ल्ड समथिंग, आई फॉरगेट, इट जस्ट अकर्ड टू मी. चार्ली चैपलिन की मूवी है, ट्रिपल रोल है उसमें उसका. ओके, द ग्रेट वर्ल्ड और द समथिंग लाइक दैट. ओके, इफ यू गूगल यू विल सी इट. उसमें वो दिखाते हैं, वन ऑफ द चार्ली चैपलिन इज ए पायलट इन द एयर. तो वो एयरक्राफ्ट में उसके पीछे जो आ रहा है ना एयरक्राफ्ट, प्रोपेलर वाले थे, उसके पास एक नेट होता है, एंड जो वो नेट निकाल के ऐसे करके छोड़ता है, द नेट गोज एंड प्रोपेलर उसमें फंस के, एंड इट ड्रॉप्स एयरक्राफ्ट डाउन. ओके, so the great dictator, I think, okay, or the great something like that. Okay, anyway, so उसमें great dictator होगा, उसमें one of them plays Hitler also. Okay, and now what happens is this particular technology is being used now, कि भाई आपने नेट फेंक दिया, उसको पकड़ के ले आया. and also अगर वो ड्रोन छोटा है तो उसको साथ ही टो करके ले आएगा. लेट्स से इट्स अ स्मॉलर ड्रोन एंड माय ड्रोन कैन कैरी इट, सो इट विल थ्रो द नेट, कैच इट, अंडरस्लंग, एंड यू कैन टेक इट टू प्लेस ऑफ योर चॉइस, एंड यू कैन प्रोबेबली एनालाइज कि ये क्या इसमें कैपेबिलिटी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, एंड कैन गिव यू मच बेटर कैपेबिलिटी. और सर्टेन कैपेबिलिटी हैज आल्सो कम अप कि ये जो एयरबोर्न होता है ड्रोन, ओके, जो पकड़ने जाता है, उसमें खुद का रडार है. बिकॉज नाउ अनदर क्वेश्चन वुड कम अप इज कि ये जो ग्राउंड रडार है आपका, जो दो तीन ये ऐसे कंट्रोल कर रहा है, अगर आपको उसी को जैम कर दिया तो फिर योर कैपेबिलिटी इज गॉन. Who's going to guide that drone? So now what happens is this drone is independent. It has got, जैसे हमारे फाइटर्स में एयरबोर्न इंटरसेप्ट रडार नहीं होता, तो ये इसमें अपना एक रडार है जो कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्राउंड रडार. नाउ इट कैन आल्सो सी कि अगर वो ड्रोन मैन्यूवर कर गया और आपकी लाइन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू से इधर उधर हो गया, तो इट कैन आइडेंटिफाई द ड्रोन, probably catch it and not let it go. So what I am saying is that all these capabilities have to build side by side. और अब जो ड्रोन्स को चाहिए वो इनको भी चाहिए ऑपरेट करने के लिए. ऐसा नहीं कि आप ड्रोन्स ऑपरेट करना मुश्किल है माउंटेन्स में, तो एंटी ड्रोन आराम से ऑपरेट हो जाएंगे. करेक्ट, सेम कैपेबिलिटी विल बी रिक्वायर्ड here also. And जहां तक बैटरीज की बात है, बहुत एडवांसमेंट हो रही है. करंटली वी आर टाइड अप, 2-3 घंटे से ज्यादा मुश्किल है. बट पढ़ी होगी न्यूज हमने बेटा वोल्ट की, न्यूक्लियर बैटरी बाय चाइना, 50 years of life, yeah, 50 years. एंड अभी इट्स 15 by 15 by 5 मिलीमीटर, इतनी छोटी, 15 by 15 by 5 मिलीमीटर मीन्स आधा इंच बाई आधा इंच, एंड वन काइंड ऑफ फिफ्थ ऑफ एन इंच थिक. ओके, अभी उसकी कैपेसिटी कम है, सिर्फ 100 माइक्रोवाट्स है, 3 वोल्ट्स है, बट नंबर ऑफ सेल्स एंड यू कीप एडवांसिंग इट. और इसमें यूज करेंगे अभी, सेल फोन्स में एक बार आपने खरीद लिया तो कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, या किसी पेस मेकर में लगा दी तो यू आर डन for life. But now very slowly you can start using them in drones subsequently. So you can launch a drone and then forget about it, it's always there, doing something other. You don't have to charge it at all. Okay, other things, how do the radiations play and all can be taken care of. So in a nutshell, what I'm saying is that whole thing which plays out in the mountainous region is very very different the way we are used to seeing drones in planes. और ये ऐसा नहीं है कि आप जैसे साइट सीइंग के लिए यहाँ से उठ के वहां चले गए तो वैसे ही ड्रोन लेके वहां पे ऑपरेट कर दिया. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. सो व्हेन पीपल व्यू इट और पीपल जज ऑपरेशंस और पीपल लिसन अबाउट थिंग्स, देन आई थिंक दिस नॉलेज में प्ले अप बिहाइंड के भाई अगर कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, राइट? So I think I'll stop here, and
you have any questions more, or probably we Nahi, can sir, move I on. will do one thing. There are loads of questions here which the guys are asking. So, let's jump into that. And I'll Okay. kind of, put in my little mirchi masala in the bit. But guys, before we do that, please like this video. Let me tell you, this kind of technical stuff you will not get anywhere, which is ground basic and in a language जो आपको और हमको सबको समझ में आती है. ठीक है? And that's the most important thing. Because बहुत लोग आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे. They will tell you latitude, altitude, the circumferential difference of this and that and the other, which we can't understand. Hello, high water of. But the way that sir has explained to us, let me assure you that अगर हमारे मेरे टीचर्स स्पेशली साइंस कैसे होते तो आज मैं भी साइंटिस्ट होता कहीं पे. No, maybe they were better, Adi. That's why you are there. That's why I left science in No, class no, no. class 11. Thank you. Although getting good marks, but I still said यार ये ठीक नहीं है. बस. But sir, thank you. I mean, it's quite an eye opener because you've actually brought about a lot of reality, and काफी लोग इन चीजों के बारे में कमेंट्स करते हैं about ये ड्रोन क्यों नहीं यूज हुआ, वो ड्रोन क्यों नहीं यूज हुआ, ऐसा हमारे पास ये है वो है. So somewhere some context needs to be brought in, and thank you for doing that. So guys, please like this video, subscribe to the channel, and most importantly spread the word. 142,000 हमने cross कर लिया है. 8 more thousand in Good. the next. Congratulations. Thank you sir. 8 more thousand subscribers in the next 14 days. हमारा जो ये target है. Let's see if we can actually hit that. Only way we can hit that is by your support. So please do the needful by just liking the video, and you can contribute towards my efforts directly. अगर आपको करना हो तो आप PayPal और QR कोड यूज कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन के साइड में है, या फिर आप सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स भी भेज सकते हैं. Alright, let's see. Yeah, Preetam Nandi on live fists. Biju Uthappa raised concern about the shift from ADA to ADE on Ghatak's development. Looking at previous ADE hiccups, what is your view? No, I think these are more of administrative issues. I mean, whether ADA does it or ADE does it, it's a DRDO thing, who can do it better, etc. Not really qualified to comment on it, Adi, because how it is playing internally, what are the capabilities, unless you get into that. I mean, I can't just sitting here make a judgment that no, ADA was better and ADE is not going to be that good. Probably they must have thought. You see, what happens is these changes do not happen whimsically. Let's say they want to shift, okay, that this to this. A lot of iterations must have gone through, must have been cleared at very high level and things like that. Okay, so probably concern over shift. I mean, people who are in the game, they will raise voice, they will say things, but probably we'll need to read up more on that. It's more of an administrative issue and not really technical. So I don't think whether I can really comment on that, right? And my opinion would be let the results talk. Yes, of course. Most importantly, whatever comes out, that will be the key. So, Anmol Sharma ji, Iranian colonel killed in Sistan Park. Moi moi. Yeah, well, that's the narrative. अभी तक colonel नहीं है, वो major general है. So let's see what comes out of it. अभी कुछ इतना वो नहीं है. There's not much. What happens is Iran, I mean, it's a hot thing. Now, what attack happens now, I think people have to understand, I mean, not that drone issue, that if you keep harboring, now what is the Iran narrative? They're saying we have killed our Iranian terrorists in their territory. Wherever there are terrorists, we will kill them. So now the country has to decide where does it want to go, what does it want to do. I mean, and it is bad because it sets a precedence. Now tomorrow, just say 2-3 countries, one or more has to do this. It will become a standard operating procedure. Anybody will say, oh, my terrorist has gone there, and it will become chaotic. Anybody can go and attack anywhere saying, okay, no, I think my terrorist is there. I mean, there has to be some semblance of order here. No? And they have to do that, sir. But when Pakistan is involved, everybody says, "हाँ, पक्का होगा." True. So that is what I'm saying. They have to change this narrative. That people have to. Otherwise, they will be first hit, and just about anybody can go and do anything there. And why I'm saying that, I find that as a military history practitioner or reader, I see a concern there myself, because some wrong people, let's say this gets legitimized. Now we have to look at it this way. I mean, don't want to get into geopolitics.
Like today, I may rejoice that okay, Pakistan got hit, right? But like I said, if it becomes SOP, then what happens is there is a threat. And on the same lines, like I said, that you create a drone, and if you don't think of its antidote, and then that monster can come back to you. So if today I feel that yeah, this is probably a very good thing which has happened. Now you have to see that people can create false narrative. Anybody can say, "Oh, my terrorist is in your country," and does it give you? I mean, you just come and attack. So they have to wake up on this. Get their house in order and stop this narrative. They must, do right things, because all nations who want to live peacefully have things at stake here, I guess. Sorry for diverting. Absolutely. Yeah, next. No, sir. That was a very good this thing. Iran surgical strike. Which drones were used? They were kamikaze, right, sir? Kamikaze drones. Now, you see, another thing what I want to do is, now it is like this. They're basically all are same here, and it depends which industry is making it. Even here now, you go on display, it is like now refrigerators actually, okay, or televisions, or what should I say, something like that. Basics are more or less same in many things. They have a motor, they have propellers, they have this, because one thing does not vary from the other to a great extent in capability or something new. I mean, I can classify them. If you want to classify them in a micro or mini or large or hail or male, that is classification, or that is the kind of thing. But if whether it is some A, B, C, D, E, so names are there, this thing, but uh, not of much relevance. It's more of a, that is why even when I talk of drones or something or anti-drone, I avoid quoting names, because that almost becomes sometimes maybe what should I say, being specific about something, that as if only that drone can do it. Okay, that is not the point. Anybody in that capability can do it. So I think we need to just focus on that, what kind of capability was used. That's true, sir. Uh, Primo 555, he says, Marshal Bedi sir, if radar cross section and coating are universal technologies in stealth, then why hasn't anybody applied them on missiles? How dangerous would stealth BrahMos or Astra be? Yeah, see, what happens is, I think the way they operate, these missiles, a missile, let's say, which is launched with that kind of plume, I don't know how will you make it stealth. When a missile is launched, let's say ballistic missile, see the live launch on a YouTube sometimes of ballistic missile. You people will detect it when it's launched. Aajkal na space technology mein, there are satellites which are picking up missiles at the time of launch also. Okay, and also at re-entry, or the kind of heat signatures that they generate. Okay, when they are coming in, it is, or the kind of control surfaces they have to use continuously. Okay, and the way they are made, the fins for controllability, etc., because they are autonomous, nobody's piloting them. Okay, their detection probably cannot be made completely stealth, but stealth features definitely, the radar cross section is required to be reduced. Late detection is what can be aimed at, but not that completely you can avoid the detection, because they don't operate like aircraft. Aircraft skin temperature, the way speed at which it goes. This ballistic missiles are always hypersonic. They don't come in hypersonic category, but they are 8, 9, 10, 11 mark they are going at. I mean, very tremendous speed. They create a lot of other disturbances in the atmosphere or things like that, which probably cannot be hidden. Okay, so complete stealth achievement that nobody will see them is very, very difficult, in my opinion. It's a comment by Batraji. Tapas program is being reviewed as the Navy has shown interest in and Adani's delivered Drishti with 70% indigenization. It's quite Yeah. an achievement, sir. Yeah. Yeah, true. So, Tapas full form is incidentally tactical platform for area. It's not double S, it is AS. I mean, it is just, I think A and S are very close on the keyboard. So, probably instead of AS gets typed. Okay. So, tactical platform for aerial surveillance. Okay. This is the program, which started. So, it will carry on. I mean, we have gone that far. Probably they will not leave it halfway. It may take a little time.
Might I ask you, sir? I mean, if you don't want to give us any confidential information where it goes there, but do we also work on suicide drones? I think so. Last time also we said India does have plan. I mean, we are working whether we are making or who's making it, are we importing it, are we not? That is extremely this thing. But I think tech, we will have a plan for that. We do have. I mean, it is not a great secret. Okay, any air force, you can guess it, would probably have that kind of capability. And India Uh, is no different, I suppose. Yeah. Rani ji, after a long time back on the channel, welcome back, sir. He says, as a force multiplier and keeping reasonable altitude in perspective, can surveillance device mounted trained eagles and falcons be applied to ISR vectors? Oh, surveillance does mountain train eagles and falcons be probably, sometimes they use it also. I mean, underwater applications are already there, huh? Incidentally, they're, that underwater surveillance, they said that yeah, what do you call, to surveil the sea, they're fish ke saath na, they, in certain fish they put those devices, because where you cannot go that deep and fish can survive there, etc. So they are using that. Similarly, eagles and falcons, you can do that. You can put a surveillance device on just about anything that goes up in the air. But the problem is controlling it, how it behaves, where it goes, what it sees, and establishing communication link with it. How is that communication link going to, whether how will that continuous illumination by radio frequency and things like that all uh, will it affect, and in what area will you fly, whether it decides to sit down at a place. I mean, how will it behave, in a particular way, when it is up, when it is in your area of interest, definitely it will provide you thing, but its behavior programming probably will be different. And to train so much an eagle, or let's say, I think it is going to become cheaper to make a drone of that kind of thing, which at least behaves as per your orders. By laws of physics possible, like I said, anything you get airborne and put a sensor in it, it can do. This would make sense if I did not have the capability to make a replica of that eagle or falcon. Let's say, but if I can make it within a reasonable time, I don't know how much will a live falcon cost. I mean, people who buy it or sell it, I don't know. Okay, or then you train it. Then you put. I mean, towards what, to prove a thing? Yes, but I think you can make cheap drones now. Then why get into it? Purely personal opinion. Pritam Nandi says Tapas was sidelined by Army and Air Force, but recently Navy took interest in Tapas. How operational requirements changes between the forces. I think Yeah, the second this is part is very interesting. inter-services. How? Sorry, requirement But how changes. do operational requirements Or vary nahin yaar, between the services? sometimes it is narrative also. See, what happens is the sidelined by Army Air Force or not. It's not question of sidelined. Sometimes the priority is dictated. Let's say sidelined is a wrong narrative, I would say. Let's say some program DRDO says that okay, we are making tapas for you. It will be out in 2022. Okay, or something like that is promised, let's say. Now it is not coming. Now Air Force needs surveillance platforms, so it says that okay, yeah, that let it come, but I need it urgently. Somebody, let's say, give a briefing to the RM or the CCA, or somebody, let's say, to the Prime Minister himself. Okay, listen, this is what we are going to lose out. Do we want a repeat of, let's say, Gilwan, or do we want a repeat of something like that? So this is going to take time. Should we, in the meanwhile, get something which is urgently required? It's an emergency kind of requirement. Operational requirement never changed. It is just that priorities that you thought that you will be able to make something at home, but it is not happening, right? So you say that okay, hold it for a while, let's get something which is already operational, because my operational edge has to be maintained. Now probably it is not classically sidelined. It may have delayed that program because the funds have been diverted, because the fact is it was not happening within that time frame. Now you can't die hungry, or you can't lose a war just trying that I will not sideline that program. So these
people who are into that program will probably have to give realistic timelines that, okay, by so and so, this thing will happen. So we can't say induction of Rafale as a sidelined Mark LCA Mark 1A program. Can we say that? No, it is still happen. Okay, but they were required, so we got them. So similarly, if Reapers have come 31, it's not that Tapas got sidelined. It is that, something was required urgently, so we got it. So I think if Navy showed interest, who gives out a statement in the press, that is probably sometimes inter-services dynamics play. But as a nation, you've already invested so much in that program. Yeah, you just can't let it go. I think it will see some future. Apart from that, sir, there is a certain element of thought process that the twin boom design with engines on the wing was not a very feasible sort of a design. I mean, I was reading, and I think somebody's covered this on the platform as well, that there is a problem in that as well because of vibrations and this and that. So they need to change the design as well. See, they probably, those innovations will keep coming. Now, this twin boom engines on the wing, etc. They let's say they want to try something new and new modifications. Sometimes, operational requirements, if he meant by the QRs, like qualitative requirements, they do vary sometimes. But that is different. Something new has come up. You say that, okay, if this is not required, this could be included, which may delay the program slightly. Because new thing has started coming in. So all these hit and trials, when you are making something new, you move in a particular fashion. So those things are natural, I guess. When you are Adi, in my opinion, we have some time to go when we mature in a way that you start something and till 90% there is no change, and then you say you're only working on the last 10%. Yeah, We yeah, are yeah. still lower part of the graph. TRL, what they call technology readiness level, is still at a lower stage. Okay, so it is not that you started a project, so till 90% you have seen it, and it is only that final thing which you are looked at. The the difference is, if I can draw an analogy, it's like cooking food. There is, I mean, the which is a established cook or a cooking industry or a hotel doesn't bother about taking a dish to a particular level. It does it without thinking. Correct. It is only that final part, whether he wants to turn it to this recipe or that recipe, what QR it wants to give it, is that he is thinking about. Initial portion is a given. But whereas a guy who's learning, who's into this, for him it's a challenge from the word go. I mean, how to cut vegetable itself is a challenge. In what shape, in what size? Then how much this? I mean, he will go with the Google one by one line, do this, do this, do this, do this, right? So we are still in that kind of stage where that you say that, okay, we have started on this program up 90% tak it's run or not. So these changes in between, you try something, you incorporate a design, you probably didn't think of the other aspects of it. What lateral change it causes, where else does it affect? Because even when people give you technology or people reveal things, or जब हम देखते हैं कि ये adopt कर लेते हैं, probably you don't see things in totality. You do something else starts happening or starts showing effect somewhere else. Then you realize कि, oh, while this was seen, probably its side effects नहीं होते जैसे medicines के. Okay, you take something, and if you don't bother about side effects, something else starts going wrong, right? So then you have to change course. G. Yeah. G says, Bedi ji, can drones be masked as aircraft or fighters to overwhelm anti-defense systems? And China claims that missiles can be masked as commercial aircraft. Is it possible? To be masked as commercial aircraft, yes, it flies all subsonic missiles. Probably, if you create that kind of signature, uh, anything can be masked like that. But drones difficult because they have to fly that high. Any See, you don't worry about. I mean, why would you worry? You have to worry about fighter aircrafts, like I mean, something who can throw ordnance or transport aircrafts. When you say, I'm sure we don't mean ones which are carrying passengers. I mean transport aircraft like a refueler, which is bad, or AVAX, which is bad, right? So now what happens is, if you're talking of masking, the any missile coming towards me or an aircraft, I mean, they are dangerous, equally dangerous, right? And missile more so more dangerous. Okay,
I would say that, a missile masking as an aircraft, or missile showing itself as missile, for an air defense guy is not much of a difference. He'll have to tackle both. Even if missile says I am missile, he'll still have to take it. If missile says I am aircraft, he still has to take it. So masking mean फर्क तब लगेगा कि एक चीज को मैं नहीं देख रहा, दूसरी चीज को देख रहा हूँ. पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैज नो रीजन टू कम टू माय बेस. नो, आई एम सिटिंग लाइक दैट. ओके, सो इट इज नॉट के ऐसे मिसाइल आपने लॉन्च कर दी जो अब तक पैसेंजर एयरक्राफ्ट लग रही है कि एटीएस रूट पे जा रही है और सडनली वहां से टर्न करके आपके पास आ गई. ऐसे नहीं होगा ना. Okay, that passenger aircraft is not only look-alike, I mean passenger aircraft का दूसरा behavior भी बहुत होता है. अगर क्वेश्चन का एम ये है कि आपने मिसाइल को ऐसे मास्क कर दिया और मैं समझूं कि एयरलाइनर आ रहा है अभी पाकिस्तान से, पर है एक्चुअली मिसाइल. ओके, दैट मिसाइल विल नॉट बिहेव लाइक एयरलाइन. That missile will not give certain codes, will not, speak out, wouldn't have given some article at some places, will not report its crossing FIR positions, will not report, will not answer to somebody. I mean, it can't be just some object flying in some particular route pre-planned and you say it's masking as a passenger aircraft. Okay. Yes, I mean, for this guy to say, okay, is it an aircraft or is it a missile? If you launch something which is an unmanned, you call it aircraft unmanned, or you call it missile, or you call it anything, it is a flying object. I mean, the way a defense guy looks at it is something unwanted, which was not supposed to be there at that particular moment, is there is a threat. It's as simple as that. So whatever name you give it. Can drones work as AWACS? Drones are already working as AWACS in the sense that all these hail drones, okay, AWACS में क्या होता है, अगर AWACS की एक्चुअल पोजीशनिंग है तो उसमें कंट्रोलर्स होते हैं AWACS में, करेक्ट. Those controllers are sitting in AWACS and they are physically controlling aircraft. It is like a ground command and control station taken up in the air. Okay, ground radar की लिमिटेशन है कि सिर्फ लाइन ऑफ साइट देख सकता है. ठीक है, हमने बात की थी कि आपके पास अगर 1000 किलोमीटर की भी मिसाइल है, लेट्स से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, और या चलो S-400 की बात करते हैं, ठीक है, 400 किलोमीटर की भी रेंज की मिसाइल है जिससे आप एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं, पर अगर वो एयरक्राफ्ट ही 50 मीटर्स पे आ रहा है तो आपको दिखेगा ही 60-70 किलोमीटर पे यार. तो आपकी 400 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल क्या करोगे, क्योंकि ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी नहीं है ग्राउंड रेडार के पास. इट विल नॉट सी, इट विल जस्ट नॉट सी बियॉन्ड दैट मच. उसका फार्मूला है, अंडर रूट ऑफ एच. अगर ग्राउंड रेडार की हाइट में 0 मान लूं तो अंडर रूट ऑफ एच, अगर फीट में हाइट देखें ना आप, तो अंडर रूट ऑफ एच लें उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो नॉटिकल माइल्स में जो आती है रेंज, वो रेडार की रेंज होती है. तो जस्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, लेट्स से हम 100 मीटर्स की बात करें या 150, 400 मीटर लगा लो क्योंकि उसका अंडर रूट निकालना आसान है. ओके, 400 फीट पे कोई एयरक्राफ्ट अगर 400 फीट पे आ रहा है तो उसका अंडर रूट 20 हो गया. 20 इंटू 1.25 कितना हो गया, 25, करेक्ट. 25 नॉटिकल माइल्स 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, अबाउट 45 किलोमीटर्स. 45 kilometers is all that you will see. Okay, now AWACS does not have that problem. AWACS is airborne. It does not have that radar horizon problem. ये 400 किलोमीटर तक देखेगी. ओके, और जो आपका फाइटर है, ये जो आपका अदर ग्राउंड कंट्रोल है, उसको वार्न कर सकते हैं ये कि भाई ये दैट इज द थ्रेट कमिंग टू यू फ्रॉम सो एंड सो प्लेस और दिस प्लेस, और इट कैन गाइड फाइटर्स टू दैट प्लेस. इट कैन गाइड सो मेनी वेपन सिस्टम्स टू दैट प्लेस. सो वो कमांड एंड कंट्रोल का जो कंप्लीट सेटअप है एयरक्राफ्ट में ही बैठा है. जो ड्रोन्स हैं, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, उसका क्या लिमिटेशन होगा कि उसके लिए जो कंट्रोलर है ग्राउंड पे है. अब कमांडेड कंट्रोल ही है ना. जो प्रीडेटर है फॉर एग्जांपल, वो सेम ही तो कर रहा है, वो एयरबोर्न है, उसके पास वेपन्स भी हैं इनफैक्ट, तो उसका कंट्रोलर तो अमेरिका में बैठा है, करेक्ट. लॉन्च उसने यहाँ से किया, सेटकॉम से कनेक्ट किया और उसको कंट्रोल कर रहा है अमेरिकन सॉइल से. तो जब उसका कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो गया इस अनमैन्ड और यूएवी के साथ, तो ही इज एज गुड एज सिटिंग इन द एयरक्राफ्ट, नो, इन दैट प्लेस. सो वहां से अगर वो रडार पिक्चर देख रहा है, वहां से सब कुछ देख रहा है और फाइटर्स को डायरेक्ट कर सकता है, वेपन्स को डायरेक्ट कर सकता है, खुद फायर कर सकता है, तो इट इज ए काइंड ऑफ डी फैक्टो. आई मीन यू मे नॉट कॉल इट एवैक्स इन टिपिकल सेंस, बट लिमिटेड फंक्शंस ऑफ एवैक्स तो कर ही रहा है ना वो. फिर आई मीन थ्रू व्हाट इज एवैक्स? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. So anything
which is airborne, can warn you of a threat and can control your system, is classically AWACS, right? In that sense, I mean, I hope the concept is clear, right? Absolutely. Jailblick says, could swarm drones come into the clutch in mountain terrains like ours? If there is no war, we could use swarm drones to do effective surveillance as well. ये स्वॉर्म ड्रोन की जरूरत नहीं है. स्वॉर्म ड्रोन्स, यू नो, ऑल द मोर डिफिकल्ट इन माउंटेनस टेरेन में क्या होता है, द वैलीज आर नैरो. लेट्स से यू आर फ्लाइंग, यू नो, अगर इतनी कैपेसिटी यू डोंट वांट टू यूज के भाई बिल्कुल ही सेफ्टी हाइट के ऊपर अगर 20,000 फुट पे तो 25,000 फुट पे ड्रोन फ्लाई कर रहे हो सर्वेलेंस के लिए, वो कैपेबिलिटी तो होगी. स्वॉर्म का कोई खास नहीं है. स्वॉर्म्स आर बेसिकली यूज्ड to saturate air defense, like we said, not to do mass kind of attacks. Surveillance के लिए swarm drones, I don't think they are required. You know, you just need seamless connectivity. देखना ही तो है. अब you see, we are, you know, एक चीज आपको एक छोटी सी गली है उसमें देखना, कोई आ तो नहीं रहा है, तो एक बंदा काफी है देखने के लिए, you know, I mean, at one time, correct? अब वहीं पे 10 बंदे बिठा दो आप, वो 10 बंदे भी वही देखेंगे जो एक देख रहा है, Yeah. क्योंकि देखने के लिए ही उतना है. नहीं, वो 10 बंदे आप वो कर सकते हो. अगर इनका ये है कि यू नीड मोर नंबर ऑफ ड्रोन्स, मे बी, यू नो, इट डिपेंड्स हाउ मच साइमल्टेनियसली यू वांट टू सी. लेट्स से बॉर्डर इज वेरी लॉन्ग, essentially this drone, you know, you want continuous surveillance. I'm not saying कि ये, अब उसकी अगर दूसरी एनालॉजी कर दें कि मेरे पास 4 किलोमीटर का पेरीमीटर है, उस पे ऑब्वियसली एक गार्ड काफी नहीं है ना. देन यू हैव टू डिप्लॉय कि एक गार्ड कितना देख सकता है. 100 मीटर आए दाएं देख सकता है तो 200 मतलब टोटल 200 मीटर अगर वो कवर कर सकता है तो 20 गार्ड चाहिए ही ना सर्वेलेंस के लिए. तो उस चक्कर में अगर आप ड्रोन, ऐसा है कि मेरे को ये 4000 किलोमीटर की बॉर्डर की बात जो की मैंने, तो ऐसा नहीं है कि एक ड्रोन अब वो 4000 किलोमीटर उधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो ऑब्वियसली वन इज नॉट एनफ, बट यू विल नीड मल्टीपल ड्रोन्स इन दैट एरिया, द एरिया दैट यू वांट टू कवर. बट स्वॉर्म की क्या है, दे डोंट नीड टू बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. लाइक, यू नो, स्वॉर्म का कॉन्सेप्ट है कि ऑल द ड्रोन्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. वो कहते हैं 3 ड्रोन से ज्यादा अगर हो और फिर अप टू एनी नंबर, they qualify to be called swarm, and they are in coordination with each other. You know, they have a job to perform. They go in a particular way, they are programmed in a way. अगर एक ड्रोन खराब होता है तो उसकी जगह दूसरा लेता है लीडर. They are like a formation, okay, and formations are used to do some damage, to do some tactical work, not just to see. You know, they have a different purpose. So in this particular scenario, this may not play out that much, as you need more number of drones. Interesting, sir. Last couple of questions. One is Preetham Nandi says, how mass drone, thank you so much. Firstly, how mass drone for a pointed attack on HPT in Kashmir, like post Balakot? Can this not saturate the AD air defense system? How prepared are we on electromagnetic warfare? That we've covered, Pritamji, we've covered in a complete show, as a matter of fact. Directed energy weapons and all that we've covered. Yeah. Everything is there in that. You know, just I think log into that. Otherwise, we'll. There is a lot, but there is a lot happening. You know, lasers are there, then anti-laser technology. Then, but lasers की you know, limitations है बड़ी. electromagnetic काम चल रहा है इंडिया में, but world over also उनकी अपनी advantages भी हैं लेजर की. You know, laser gun you can use, but उसमें काफी issues हैं लेजर के भी. You know, when you're talking of countering drones at larger ranges, you know, you need that much of power, you need glint free, you need focus, you know, 10-15 seconds at least as a point, you know, if something is moving or etc. Atmospheric issues हैं, blah blah. Okay, power is the major issue. कितनी power आप produce कर सकते हो, कितनी देर उसका dwell time है. I think we have covered in detail in the DW. Probably he can have a look. Sir, as per anti-drones, are EM disruption or pulse weapons a regional deterrent to drones? The, you know, any disruption, you know, EM disruption, or they are definitely deterrents to enemy drones, provided you have that kind of capability. This capability is coming up, you know, like we said, again, DW, directed energy weapons, maybe covered this quite in details. But any weapon, you know, which can, you know, what can EM, what does EM or pulse weapon do? You know, they can affect the control surfaces of a drone. You know, they can burn the systems. You know, they can, the heart of the system, they can
disrupt. So they are definitely big deterrents, no doubt about it. Sir, I'd like to say thank you so much. This has been really, really interesting because थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना सर, क्लियर हो गए हैं. सो जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे को आते हैं कि भाई ये चीज़ क्यों नहीं है. I think that will be very, very, very easy for us to understand going forward, because I think this should be a standard episode that any sort of defense commentator or something like that should watch. I'm not saying it because it's on my platform, but I guess especially for the drones part of it, आपको you will. I mean, my lot of things have kind of got cleared. So thank you so much, sir. It's always a pleasure Thank learning you. from you. And of course, as I said, we've got 3-4 more subjects that I planned for you. वो अगले एक डेढ़ हफ्ते में बात करेंगे, and we'll try and fix up a time for you, sir. Thank I'm you so sure much. all the audience will also love to see you back. Till then, sir, Jai Hind. Thank you so much. Thank you, Adi. All the best.